The beta sheet. Beta sheet is probably the most abundant structure. Um, how it is different from alpha helices is that carbonyl oxygens and amides also form hydrogen bonds in it, but it is with the neighboring chains. तो अल्फा हेलिक्स के अंदर तो ये था ना कि एक ही हेलिक्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी, लेकिन इसमें ये एक नेबरिंग बीटा शीट के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेगा, वो उसी चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर नहीं करेगा. नाउ अब जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेगा, हम जितनी पेप्टाइड्स है ना, इसको N2C, जिस तरह हम लोगों ने ट्रांसलेशन में या ट्रांसक्रिप्शन के अंदर देखा था, ट्रांसलेशन में सॉरी, कि इट गोज फ्रॉम N to C, तो इसी तरीके से इट कैन, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम N to C और एक दूसरी N to C जाने की बजाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल. बट इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ बीइंग एंटी पैरेलल, or is there any disadvantage or advantage of being parallel? Let's see. Again, it's sorts of come as a disclaimer, like disclaimers which come in movies, that all peptide bonds are formed, whether it's a beta sheet or alpha helices, it depends on its sequence. Now I have a question for you guys. The top one here is anti-parallel and the bottom one here is parallel. Which is more stable? इनमें से कौन सा ज्यादा stable है? I have a hint for you guys. Look at the hydrogen bonding pattern. I want to come in and actually see if you can see me. Yes. ये दो पॉइंट्स हैं. मैं इन दो पॉइंट्स को आप देख रहे हैं, तो क्या इन दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स ज्यादा होगी या इन दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जितना बॉन्ड छोटा होगा, जितनी दो चीजें आपस में करीब होंगी, उतनी उनके दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रांग होगी. नाउ लेट्स गो बैक एंड सी कि जो एंटी पैरेलल पैटर्न है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन शेयर कर रहा है वो काफी पास है, एज कंपेयर टू जब हम पैरेलल सीक्वेंस देखते हैं तो उसके अंदर वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद एंटी पैरेलल अरेंजमेंट. तो इसमें कौन सी ज्यादा स्टेबल हुई? एंटी पैरेलल. नाउ अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, इफ आई से टू यू दैट ओके डिजाइन अ बीटा शीट स्ट्रक्चर एंड इट शुड बी स्ट्रांग, then you would design anti-parallel. Okay, now look at the dimensions of a beta sheet. Successive side chains of a polypeptide chain in a beta sheet extend to opposite sides of the sheet with a 2 residue repeat distance between them is 7 angstrom. So there between from one end to the amino acid to the next ki jab uski pleat aati hai, the distance is 7 angstrom. Let me show you. So you can see that the distance is 7 angstrom. So you can actually see कि atom, यानी कि basically it pretty much takes 2 amino acids. Okay. Now, दो बीटा शीट को आपस में जोड़ती क्या चीज है? Those are known as loop regions. So loop regions that connect two adjacent anti-parallel beta strands are called hairpin loops. अगर दो एडजेसेंट एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हो तो उनको हेयरपिन लूप्स कहते हैं. वाइल सम लूप्स जो अगर पैरेलल हो तो लूप काफी लंबा होता है, क्योंकि उसको कहां से जाके जोड़ना है? उसके सी टर्मिनल से. एंड दे ऑल द लूप्स आर रिच इन पोलर एंड चार्ज रेजिड्यूज. क्योंकि दे आर रिच इन पोलर एंड चार्ज रेजिड्यूज, वी हैव डिस्कस्ड दैट अर्लियर दैट ऑल द चार्ज रेजिड्यूज कम outside, on the outer side of a protein structure, so that ultimately they can make hydrogen bonding with water, and that's how things got soluble. So if there is a loop like structure, it will be on the surface of the protein. There is a very interesting evolutionary perspective to remember here, and that is that most of the mutations happen in the loop region.
So most of the insertions and deletions are happening in the loop region, while the core of the protein, most of the hydrophobic residues which are buried deep inside a protein are stable. Now, loop regions are very important because they form most of the active sites of most of the enzymes, and antigen binding sites are formed of 6 loop regions as well. Why? you know you know about the antibody structure, and in this antibody structure we have antigen binding region is formed of 6 loop regions which are the complementarity determining regions, and they can recognize a wide variety of antigens. लेकिन वो loop region में क्यों है? Have a think about it. Because loops are much more flexible than alpha helical or beta sheet structure. One of the basic efforts I am putting into this course is to make you guys understand that how you are going to select from the secondary structure element. ये आपकी बायोटेक की, ये आपकी प्रोटीन इंजीनियरिंग की बेसिस है कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियर, और ये वो ब्लॉक्स हैं जो आपके हाथ में हैं, वो टूल्स हैं कि मैंने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर डालना है, मैंने बीटा शीट स्ट्रक्चर डालनी है, या मैंने एक लूप डालना है. तो लूप इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर यू हैव. हेयर पिन लूप्स जो एक टू एंटी पैरेलल शीट्स के दरमियान होता है, वो प्रोटीन बैकबोन को एब्रप्ट टर्न करने के ऊपर मजबूर करता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट, टाइप 1 एंड टाइप 2. Type 2 turns are very difficult to map on X-ray diffraction because, as we earlier discussed, that they have a glycine in the second residue, and glycines are very difficult to map. अगर मैं आपको तमाम अमाइनो एसिड्स दिखाऊं, then you would see कि some amino acids have propensity to make more alpha helical structure, some more beta conformation, and some more beta turn. For example, look at this graph. जो top one है glutamate, वो बड़ा happily alpha helical structure बनाता है, but not so much beta conformation, and slightly on average वो beta turn के अंदर involve है. But if we compare that with, for example, the last one, glycine, it doesn't like to make alpha helical or beta conformation, rather a beta turn is its more favored position. और अगर मैं जाऊं एस्पार्टेट में जो वेलिन और हिस्टिडीन के दरमियान में है on this graph, you can see that it makes beta turn very happily and also to some extent alpha helix, but it doesn't like to make beta conform, doesn't like to come in beta sheet structures. Now, I have a question. We have discussed, we know quite a lot कि आपकी cells में proteases होते हैं जो different proteins को chop कर देते हैं. But what structural elements are most often attacked by proteases? Actually, that is loops. और अगर आपको किसी, मसलन आप एक बायोटेक कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको ये कहती है कि जनाब हमारे जो ये प्रोटीन है, ये जो हमने दवाई बनाई थी, ये तो बॉडी के अंदर काम ही नहीं करती, आप जैसे ही इसका इंजेक्शन देते हैं प्रोटीएसेस इसको चॉप ऑफ कर देते हैं. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? You are going to re-engineer the loops. So the image shown here is of an omega loop which has a very good packing inside it, and therefore it's a bit stable structure as compared to rest of the loops. But this is something you need to understand, that when you are working, these sort of tasks would be given to you. And that is what your training is all about. कि आप लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स को इतने ध्यान से पढ़ना है कि for the rest of your life you can ultimately, when you look at the structure, you can understand that how you can engineer it further to benefit humanity.